Notifications are out. युद्ध का बिगुल बज गया है. The exam is on the 26th of November. Form filling process starts on August 2nd and is there till September 13th. बहुत समय है. And also the admit cards would be available from 26th of October. That is the day when you will get to know which of the 3 time slots you have to write your CAT exam on. But the most important question that now comes to our mind is my profile good enough? What is the percentile I should aim for to get a sure shot call from IIM ABC, LIK and so on? Like, जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे. This is about the time जब लोग काफी सीरियस हो जाते हैं अपने पढ़ाई को लेके, especially the people who have already given CAT exams before. उनको बेसिक्स ऑलरेडी पता होता है और ये जो 4 महीना है इसमें उनको फाइन ट्यून करना होता है, प्रैक्टिस करते रहना होता है, so that when you write CAT you can solve the questions fast. आपको अपने पुराने फंडे को रिवाइज करना होता है, आपको टेस्ट लिखनी होती है और सम को सॉल्व ही नहीं करना होता है, समझना है कि हाउ टू सॉल्व दिस सम्स फास्टर. And let me take this opportunity to introduce the sponsors of today's video, IQUANTA. IQUANTA के बारे में आपको पता ही है, one of the most innovative platforms to study for MBA CAT. But you should not believe me. Look at these testimonies. The best CAT toppers have come out from this institute. This is the best time because their last batch is starting very soon. So you should go through their demo videos क्योंकि इससे आपको पता लगेगा कि क्या इनका पढ़ाने का स्टाइल आपके सीखने के स्टाइल से मैच करता है कि नहीं. क्योंकि जैसा मैंने बताया, ये टाइम सिर्फ कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने का नहीं है, कैसे चीजों को फास्ट सॉल्व करना है उसका भी है. गो थ्रू द पेडागॉजी of the teachers who are teaching there, serial CAT toppers. How much marks do we need to score to get 99 percentile? Here is the official marks published by CAT themselves. You will see that 40 से 50% marks अगर आपने स्कोर कर लिए तो you have a very good chance of getting that 99 percentile. मैं बार बार 99 परसेंटाइल क्यों पुश करता हूं? क्योंकि हमारे जो इंडिया में सबसे बेहतरीन कॉलेजेस है, द बेस्ट कॉलेजेस, IIM ABC 1000 सीट, LKI another 1000 सीट्स, SPJIMR, FMS सब मिला के और कुछ 2500 सीट बनते हैं. बट यू शुड ऑल्सो रिमेंबर अबाउट रिजर्वेशंस. There is about 22.5% reservation for SC and ST and 27% reservation for other backward classes non-creamy layer. तो total मिला के 49.5% is reservation seats. And add to that the EWS category जहां पे 10% और reservation है. तो मोट बात यह है कि जनरल कैंडिडेट हैज ओनली 40% सीट्स. ये भगवान क्या जुल्म है. मारो हमको जिंदा मत छोड़ो सालो. तो 2500 का 40% कितना होता है? लगभग 1000 सीट्स. सो दिस फाइट फॉर द बेस्ट कॉलेजेस ऑफ इंडिया इज वेरी वेरी टफ. 1000 सीट्स में आपको अपने आप को पाना है. एंड दैट इज वाई what is the percentile that makes you a sure shot, safe call for the premier colleges becomes so important. But most of these colleges also need your profile. Your profile should be very good. So let us take this example. Let us consider 3 gentlemen. Ross, जिनको 999 आया है, मतलब 90% in 10, 12 and graduation. Chandler, जिनको 887 आया है. एंड फाइनली जोई, जिसको 60 एंड 58% मार्क्स आए हैं 10, 12 एंड ग्रेजुएशन में. अब समझने का कोशिश करते हैं कि इनको श्योर शॉट कॉल पाने के लिए व्हाट इज द परसेंटाइल दैट दे शुड बी एमिंग फॉर. मैं तो कुछ और ही समझ रहा था. फर्स्टली लेट मी टॉक अबाउट IIM Ahmedabad.
Ross needs 99.6 percentile. Chandler needs 99.8 percentile. While sadly, Joey will not get a call from IIM Ahmedabad unless he gets 100 percentile. Moving to IIM Bangalore, Ross can get a call at 98 percentile while Chandler will get it at 99 percentile. Again, sadly, Joey might not make it into IIM Bangalore. But there are other things that come into play in IIMB, like female candidates have additional weightage. Then if there is a sudden spike, like any 10 or 12, you have got 96, 97 percentage, then you will have a chance. And there are conversations that they are not going to consider the graduation marks in the selection criteria at all. But more to come on that. For IIM Kolkata, both Ross and Chandler will need 99.5 percentile, but Joey might not make it at all. Also, IIMC would give a special privilege to CA and CFA holders because it is a more finance-centric college. Let's go to FMS. For FMS, you need 99.5 percentile cutoff. Absolutely. All three, Ross, Joey and Chandler will make it. But if you do not have a 99.5 percentile in verbal, your chances would reduce because they are again a little focused on verbal ability. So ensure that you get good marks in verbal ability if you want to go to the college which has 2 lakhs in fees and about 30 lakh in average placement. Coming to Kozhikode and Lucknow, Ross and Chandler can make it with 96 percentile. They will get a call, but Joey will need 98 percentile. For IIM Indore, you need 97 percentile to get your call for both Ross and Chandler. Joey sadly might not get a call at all unless it is like 100 percentile. Finally, coming to SP Jain. SP Jain is a profile based call. So if you get 85 percentile, you based on your profile, like you have represented your state in cricket, you are a national Carnatic dancer, or you are a singer of repute, so something that differentiates your profile from the masses, then with 85 percentile also you might get a call. But to be honest, you need a little more percentile, I would say like a 94, 95, and then something very good to bring you in, because SP Jain does not have a reservation category. It is a private college. So till that percentile it might not go. And for Joey would need 98 percentile at least to get a profile based call from SP Jain. So that brings me to the prime mistake that you have to avoid for this CAT examination. In October 25th, you would know when your slot for CAT is. Ensure that from that date till the end, you practice at least one mock CAT every 2 or 3 days during that time slot. I made this mistake. मैंने ये गलती किया हुआ है कि मैंने अपना slot 10 से 12 वाला ले लिया था, but at that point of time I used to sleep, क्योंकि मेरा नाइट शिफ्ट हुआ करता था ऑफिस में और 5 से रात के 2 बजे तक काम करता था, फिर आके पढ़ाई करता था एंड देन सो जाता था. तो उठते उठते मुझे लगभग 12 बज जाते थे. तो 10 से 12 वाला जो स्लॉट है, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आई वॉज वेरी ग्रॉगी, वेरी लेस फोकस्ड. आप ये गलती ना करें. आपका जो भी स्लॉट हो, उस स्लॉट में अक्टूबर 25 से आपको सारे मॉक कैट्स उसी स्लॉट में प्रैक्टिस करना है, सो दैट यू बिकम वेरी कंफर्टेबल. योर ब्रेन बिकम्स वेरी शार्प एट दैट टाइम स्लॉट. थोड़ा पढ़ाई का भी बात कर लेते हैं. 400 घंटे चाहिए आपको कैट को क्रैक करने के लिए. 150 घंटे आपको चाहिए टू रिवाइज योर कॉन्सेप्ट्स, टू लर्न न्यू कॉन्सेप्ट्स. 150 घंटे आपको चाहिए इन कॉन्सेप्ट्स को स्पीड अप करने के लिए. एंड देन फाइनली मॉक कैट्स. आपको एटलीस्ट 50 मॉक कैट्स लिखने हैं. 150, 150, 100. 400 घंटे का एफर्ट देना है. 100 से भी ज्यादा दिन बाकी है, तो दिन का 4 घंटे का आपका एफर्ट बनता है.
ये आप देंगे तो मेरे तरफ से आपको शुभकामनाएं हैं, आपका कैट जरूर क्लियर होगा। जय हिंद।